Okay, now the class is on as well as YouTube link, उसको अवेलेबल होगा, आपके पास लिंक आ जाएगा बाद में। जहां तक महारत्ना नवरत्ना का प्रश्न है, उसके बारे में मैं आपको बात करूंगा सेपरेट क्लास में। और जो भी इसने सौरभ ने जिक्र किया, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न ऑफ ग्रोथ, उसको मैं बताऊंगा, मेरे माइंड में रख लिया, मैंने नोट कर लिया। फिलहाल एज ऑन डे आज थोड़ी सी बात करेंगे सिक यूनिट्स के बारे में। सिक यूनिट्स क्या है, सिक इंडस्ट्रीज के बारे में, उनकी डेफिनेशंस क्या क्या है एज पर ऑफिशियल, और साथ ही साथ उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है, ताकि कम से कम एक कॉन्सेप्ट को हम आगे मूव कर सकें ये सोच के। तो सिक यूनिट्स क्या होती हैं, आप लोग बताएं थोड़ा सा मुझे, कोई स्टूडेंट बताएं, व्हाट अबाउट सिक यूनिट्स? क्या जानते हैं सिक यूनिट्स के बारे में, हम बताएंगे बेटा? सर सिक यूनिट बेसिकली वो यूनिट्स होते हैं जो अगर कुछ क्राइटेरिया होता है कि 1 साल तक इन ऑपरेटिव रहे या लो कैश पे काम करें या जो ग्रोथ ना कर पाए, तो वो सिक यूनिट होती है। तो अलग अलग क्राइटेरिया होता है सिक यूनिट को डिफाइन करने का। जैसे कुछ कंट्रीज में 1 साल होता है, कुछ कंट्रीज में 2 साल है, कुछ कंट्रीज में 6 मंथ है, कि लो कैपिटल पे काम करती हैं या लो कैश फ्लो पे काम करती हैं, इनऑपरेटिव रहती हैं, ग्रोथ पैटर्न का पूरा सही नहीं होता। बेटा बेसिकली थोड़ा सा हम कोशिश करें एक एक स्टेप आगे चलने की। तो जो इंडस्ट्रियल सिकनेस है, दिस इंडस्ट्रियल सिकनेस यूजुअली रेफर्स टू ए सिचुएशन when an industrial firm performs poorly, incurs losses for several years, and often defaults in its debt repayment obligations. This is basically the general opinion towards industrial sickness. Industrial sickness, or you can say a sick industrial unit, it may be defined as one when it fails to generate a surplus on a continuous basis and depends on frequent infusion of external funds for its survival. Basically, there are a number of aspects through which we can understand the concept of industrial sickness. An industrial unit tend to show sign of financial distress, or you can say a sickness, starting with, जहां से स्टार्ट होती है प्रॉब्लम, दैट में कम फ्रॉम शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रॉब्लम, रेवेन्यू लॉसेस, ऑपरेटिंग लॉसेस, मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ overuse of external credit. Basically, these are the preconditions. That is short-term liquidity problems, revenue losses, operating losses, or you can say if the firm is moving in the direction of overuse of external credit, it means the firm is running on the path of industrial sickness. अब थोड़ा सा कोशिश करें इस कॉन्सेप्ट को देखने की, समझने की, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स। एक लेमैन के एंगल से क्या है, एक इन्वेस्टर के एंगल से क्या होता है सिकनेस, ऐसे ही बैंकर क्या कहते हैं, और इंडस्ट्रियलिस्ट इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर इसको देखें इस एंगल से, तो एज ए लेमैन ए सिक यूनिट इज वन विच इज नॉट हेल्दी, जिसे कोई बाकी चीजों से मतलब नहीं है, सिंपल आदमी है, वो तो ये कहता है कि सिक यूनिट वो है जो हेल्दी नहीं है। A person who is sick, who is not healthy, simply layman की लैंग्वेज में यही है। लेकिन अगर इन्वेस्टर के एंगल से बात करें, इट इज वन विच इज नॉट गिविंग डिविडेंड्स। इन्वेस्टर का एंगल डिविडेंड्स का होता है, तो द फर्म विच इज नॉट गिविंग डिविडेंड्स, इट इज नोन एज सिक, एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इन्वेस्टर्स। If we deal with the point of view of the banker, then from that point of view, it is a unit which has incurred cash losses in the previous years, which has incurred cash losses in the previous years and is about to repeat the same performance in the current and coming years. If losses are there, and if these losses are expecting to be remain with the firm in coming years, this is normally the point of view of the
bankers. और अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट के एंगल से बात करें तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ यूनिट which is making losses and about to close. If the firm is about to close, it is regularly making losses over the periods and it is going to be closed. It seems to be going to be closed. It is normally the point of view of the industrialist. तो सिक यूनिट्स के लिए अलग अलग ओपिनियन अलग अलग लोगों के एंगल से हो सकती है, लेकिन अगर बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज, रिजर्व बैंक एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, sick unit is that which has incurred a cash loss. A sick unit is that which has incurred a cash loss for 1 year and is likely to continue incurring losses for the current year as well as in the following year. लास्ट ईयर उसको लॉस रहा हो, इस साल भी लॉस है और कमिंग ईयर में भी लॉस की एक्सपेक्टेशंस हैं. Then the unit may be termed as sick as per RBI. The unit has an imbalances in its financial structure. The unit has an imbalances in its financial structure such as current ratio is less than 1:1. When we say current ratio of financial structure is less than 1:1 and there is worsening trend in debt equity ratio. तो यहाँ दो तीन बातें हैं. आरबीआई दो तीन एंगल से बात करता है. वो डेट इक्विटी रेशियो से भी बात भी करता है, वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से बात भी करता है और वो लॉसेस के एंगल से बात भी करता है. तो लास्ट ईयर लॉस रहे हो, करंट ईयर लॉसेस है और फ्यूचर ईयर्स में भी लॉसेस की एक्सपेक्टेशंस है. दिस इज वन एस्पेक्ट. एंड एज वेल एज द यूनिट व्हिच हैज इम्बैलेंसेस इन इट्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में इम्बैलेंसेस है और साथ ही साथ जो करंट रेशियो है वो 1:1 से कम है. इट मींस देयर इज वर्सनिंग ट्रेंड इन डेट इक्विटी रेशियो. तो डेट का और इक्विटी रेशियो का जो ट्रेंड है वो यूनिट्स के अगेंस्ट है. इट मींस डेट आर मोर रेगुलरली मोर देन द इक्विटी. इफ द डेट क्वांटिटी ऑफ डेट इज रेगुलरली इंक्रीजिंग, द रेशियो इज डिस्टर्ब in favor of debt, then the firm is going to be sick. It is simple definition as given by Reserve Bank of India. अब जो इंडस्ट्री के एंगल से बात करते हैं हम लोग नॉर्मली, तो there is one, you can say, like constitution of industry that is known as Companies Act. Companies Act 2002. कंपनीज एक्ट में अभी मॉडिफिकेशंस हुए. देन कंपनीज एक्ट 2002 इट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक इंडस्ट्री एंड it tells that sick industrial companies means an industrial companies which has the accumulated losses in any financial year equal to 50%. The accumulated losses in any financial year equal to 50% or more of its average net worth during 4 years immediately preceding such financial years. Or it means simply, this is one aspect. It says that अगर accumulated losses किसी financial year में उसकी नेट वर्थ से 50% से ज्यादा है, 50% है या 50% से ज्यादा है ड्यूरिंग 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच फाइनेंशियल ईयर. एक ईयर में ज्यादा है और उसके बाद लगातार आगे 4 साल तक कंटिन्यू करते हैं लॉसेस नेट वर्थ से 50% या 50% से ज्यादा. तो उस केसेस में एज पर कंपनी एक्ट 2002 द इंडस्ट्री में बी कॉल्ड सिक. This is one aspect. Another aspect is if the company failed to repay its debt within any 3 consecutive quarters of the consecutive quarters on demand made in writing for its repayment by a creditors or creditors of such company. It means simply
that if any company is failed, अगर उसने अपना जो डेट है उसको वापस किया जाना, if fail to repay its debt within any 3 consecutive quarters, 3 लगातार क्वार्टर्स में अगर अपने डेट को रिपे करने में वो फेल है ऑन डिमांड और डेट मांगा जा रहा है, तो मेड इन राइटिंग, अगर उसका डिमांड, डेट की डिमांड राइटिंग में की गई, जिसने उधार दिया वो राइटिंग में वापस मांग रहा है और 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक वो वापस नहीं हो पा रहा है, then the concerned firm may be called the sick, or this unit may be called sick. तो कंपनी एक्ट 2 एस्पेक्ट बताता है, एक तो बताता है लॉसेस का, अगर लगातार 4 साल तक लॉसेस रहे हो नेटवर्थ के 50% या उससे ज्यादा, एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट यह है कि 3 क्वार्टर्स तक अगर डेट जो लिया गया है उसका ओनर डेट वापस मांग रहा है इन राइटिंग और डेट वापस नहीं हो पा रहा है, then also the company may be called a sick units. It means there is another terminology in case of Indian economy that is known as small scale industrial units, SSI. कब सिक बनेगी? As per development commissioner. One aspect was given by RBI, another was Company Act. Third concept is coming from the development commissioner. Small scale industrial units become sick if, यहाँ पर जो डेवलपमेंट कमिश्नर के एंगल से जो डेफिनेशन है वो 3 एस्पेक्ट देती है। 3 एस्पेक्ट के हिसाब से कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट सिक बन सकती है। 1, capacity utilization is less than 50% of the highest achieved during the preceding 5 years. Capacity utilization is less than 50% of the highest achieved during the preceding 5 years. तो जो भी हाईएस्ट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रहा पिछले 5 साल में उससे आधा भी नहीं है, it is less than 50%. अगर ऐसा है तो कंपनी में कम इन द कैटेगरी ऑफ सिक। तो पिछले 5 साल में हाईएस्ट था उससे आधा भी नहीं है आज, then the company may be called a sick company, a sick unit. Another is net worth has been eroded by more than 50%. तो जो नेट वर्थ है which is at risk, नेट वर्थ रिस्क पर है कम से कम 50% के, तो भी कंपनी सिक यूनिट्स कही जा सकती है। The unit has remained closed for a period more than 6 months. ये तीसरा एस्पेक्ट है। It means that the unit has remained closed for a period of at least 6 months. तो कम से कम 6 महीने तक अगर बंद है तो वो सिक कैटेगरी में जा सकती है। दिस इज एज पर डेवलपमेंट कमिश्नर। अब इन बेसिस पे बात करें अगर इंडस्ट्रियल सिकनेस की, तो द सिक इंडस्ट्रियल कंपनी एक्ट 1985, the Sick Industrial Company Act 1985 identifies sickness in terms of cash losses for 2 consecutive financial years, cash losses for 2 consecutive financial years, and accumulated losses equaling or exceeding the net worth of the second financial year. Basically, what is required and what is the meaning of sick industry or sick units, there are number of definitions. जो भी लेमैन की डेफिनेशन हमने पढ़ी उसमें साफ सारी बात कि उसकी हेल्थ खराब है, चाहे वो लॉसेस की वजह से हो, डेट वापस ना कर पाने की वजह से हो, या पिछले 6 महीने से बंद चल रही हो,
नेटवर्थ का 50% से कम यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा हो, तो इन डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स वी ऑब्जर्व दिस सिकनेस। और वो जो डिफरेंट एंगल्स हैं वो they may come from RBI, they may come from Development Commissioner, they may come from Company Act. There are a number of aspects. The State Bank of India has defined the State Bank of India has defined a sick unit as one which fails to generate an internal surplus, on a continuous basis and depend for its survival upon frequent infusion of fund. It means simply कि सरप्लसेस नहीं डेवलप हो पा रहे हैं, नहीं जनरेट हो पा रहे हैं कंटिन्यूअस बेसिस पर, और वो फंड्स के इन्फ्यूजन से काम चला रही है। मतलब फंड्स को डिसइन्वेस्ट करके, फंड को मार्केट में सेल करके काम चला रही है। कुल मिला के दिस इज द another angle given by State Bank of India that the company may be called sick units or sick company. अब जहां तक सिक यूनिट्स की और सिक कंपनी की बात करते हैं, इनके डिफरेंट फीचर्स हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज आप कह सकते हैं, कई मायने में वो होती हैं। जैसे एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल सिकनेस is a serious socio-economic problem, which is a result of unplanned industrial growth. It is a universal problem. This is not the case of Indian economy only. This is the case of almost all the economies that may be developed or developing. But we may consider this is a problem of socio-economic nature, because the industries or the units are established in the societies only. और अगर बात करें एक स्टेप आगे जाके, it is outcome of various causes. Sickness is the outcome of various causes. जैसे हम बात कर सकते हैं कि industrial sickness is the net result of variety of financial, technical, managerial, personal and marketing causes faced by industrial units, faced by the firm. अगर कोई फर्म फाइनेंशियल ग्राउंड पर, टेक्निकल ग्राउंड पर, मैनेजरियल ग्राउंड पर, पर्सनल या फिर मार्केटिंग ग्राउंड पर फेल है, वहां पर प्रॉब्लम्स है, वहां सिकनेस है, तो फर्म मे बी कॉल्ड इन लाइक यू कैन से इट इज अ सिक इंडस्ट्री और सिक फर्म due to the health, financial health or the technical health or managerial health or personal health, or we can say marketing health of the company. So when we observe the situation of industrial sickness or the health of the any firm, we are having the different dimensions. हम उसे फाइनेंशियल हेल्थ के एंगल से देखते हैं, हम उसे मार्केटिंग हेल्थ के एंगल से देखते हैं, मार्केटिंग सिकनेस के एंगल से देखते हैं, पर्सनल सिकनेस के एंगल से देखते हैं, कई बार टेक्निकल या मैनेजरियल सिकनेस के एंगल से भी देखते हैं। तो सिकनेस इज नॉट अ वे केवल लॉसेस के एंगल से देखें, अगर मार्केटिंग में फेल है तो भी कंपनी सिकनेस की तरफ हो जा सकती है। तो आप एक बात साफ हो रही होगी, वो ये कि देयर इज नो एज सच स्पेसिफिक डेफिनेशन, बट व्हेन वी हैव टू अंडरस्टैंड एज अ स्टूडेंट, कुछ डेफिनेशन हमें चाहिए होती हैं समझने के लिए। तो फॉर दैट पर्सपेक्टिव हम फॉर द स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम आरबीआई को या कंपनी एक्ट को ले सकते हैं अपने स्टडीज के लिए। बाकी फीचर्स के एंगल से हमें ये सब बातें डिस्कस करनी होती है। देयर आर सम सिम्टम्स which are visible. It means simply that industrial sickness is visible by various symptoms. दिखेगी कैसे कि कोई इंडस्ट्री सिक है? The symptom may be financial difficulties, low profitability, inability to pay interest,
and loan installments. EMI नहीं दे पाई है फर्म, इंटरेस्ट भी नहीं दे पाई है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में है लगातार, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है. These are the symptoms. These are the symptoms through which we can recognize the specific firm या तो सिक हो चुकी है या सिक होने की तैयारी में है. और उसकी जहां तक कॉन्सिक्वेंसेस की बात है, there are some serious consequences. The consequences of industrial sickness on employees, consumers, investors, management, and the national economy are serious. There are serious consequences on the national economy as well. So, जो aspect है, this is not the problem of firm only. This is a problem of nation, because it affects the it negatively affects the employees, it negatively affects the consumers, it negatively affects the investors and management, and overall the national economy. Therefore, the consequences of this problem are very serious. In addition, bank and term lending institutions come in difficulties due to industrial sickness. अब इसकी थोड़ी सी एक स्टेप आगे बात करें तो कुछ बैंक्स भी और कुछ लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस भी वो इंडस्ट्रियल सिकनेस की कैटेगरी में आते हैं. जो लैंडिंग करने वाले हैं वो भी आ जाते हैं कई बार, क्योंकि इतना लैंड कर दिया अब उनके पास वापस नहीं मिल रहा है. नाउ दीज lending institutions may also come under the category of sickness because their profitability is low now because their performance is low. So for that point of view, this problem is a very serious problem, and that to be tackled from that point of view only. और थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बात करें, कोई भी फर्म, कोई भी इंडस्ट्री ओवरनाइट या सडनली सिक नहीं होती. देयर इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. धीरे धीरे सिक होती है. इंडस्ट्रियल सिकनेस इट टेक प्लेसेस इन अ ग्रेजुअल मैनर, not suddenly, not overnight. Various stages are involved in this process. They include normal unit tending towards sickness, beginning of sickness, and confirmed sickness. It means initially tending towards sickness, beginning of sickness, and confirmed sickness with normal feature. जब हम बात करते हैं किसी इंडस्ट्री की, उसके सिक नेचर की, तो from that point of view we simply observe whether the company is tending towards, company is bending towards sickness or not. तो आज की परफॉर्मेंस से आप उसके 5 साल या 10 साल बाद की परफॉर्मेंस को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो इट मींस इफ द कंपनी इज टेंडिंग टुवर्ड्स सिकनेस, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, and if it is the beginning of sickness, then we can say it is the second stage, and if it is the confirmed sickness, this is the third stage, or you can say last stage, with normal features. When we say normal feature, it means there are some cases which are become sick suddenly even, but in normal cases the sickness is having the gradual process. Preventive measures during sickness are useful for avoiding this sickness. When the company is tending towards sickness, it is in the first stage, suppose, then some preventive measures are required. But the problem is how a company recognize itself that it is going to be sick in firm over a period of time. Basically, this is the duty of the owner, or you can say the manager, or you can say the research and development section, R&D section of the concerned firm, so that the preventive steps can be taken well in time. These are the basic general understanding of industrial sickness, what the definition is, what the features are. Now, थोड़ा सा कोशिश करें एक स्टेप आगे बढ़ने की. So there are 3 aspects
कुछ फर्म्स होती हैं जो शुरू से ही सिक होती हैं, कुछ बाद में सिक होती हैं, कुछ को सिक बनाया जाता है. It means some are born sick, some became sick, and some are made sick. When we say the company which are born sick, it means that, just wait. It means that when we observe, when we understand born sick companies, it means from inception, from starting, their planning is bad. If their planning is bad, their appraisal is bad, and the market survey on the basis of which the company was established. जिस मार्केट सर्वे के आधार पर कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी, वो मार्केट सर्वे ही गलत था. वो मार्केट सर्वे ही गलत था. या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन किया गया था, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन फॉल्स था, गलत था. या फिर वन कस्टमर वन प्रोडक्ट की जो कॉन्सेप्ट है कि एक व्यक्ति एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा और एक को बनाएगा, इट मींस बेसिकली देयर आर सम इश्यूज, यू कैन से बैड प्लानिंग, पुअर अप्रेजल, inadequate market survey, or fixed investment decision are false, or even one customer and one product. These are the simple examples of born sick companies. सर वन कस्टमर एंड वन प्रोडक्ट का क्या मीनिंग है? One customer, one product means if a firm observe, मान लिया फर्म ने कोई सर्वे कराया स्टार्टिंग में, उस सर्वे के बेसिस पे फर्म स्टैब्लिश हुई, और फर्म के सर्वे में ये बात आई निकल के कि कस्टमर जो प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा वो प्रोडक्ट केवल हम और हम ही बना सकते हैं. वन प्रोडक्ट वन कस्टमर, तो प्रोडक्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय दिस फर्म will be consumed by the consumer. केवल कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए उसको केवल और केवल यही फर्म स्टैब्लिश, यही प्रोड्यूस कर सकती है. दिस इज वन प्रोडक्ट वन कंज्यूमर वन प्रोडक्ट. तो अगर ये सर्वे रहा है तो अगेन दिस इज अ फॉल्स सर्वे. ऐसा नहीं होता. इट मींस देयर आर सम फर्म्स व्हिच आर बोर्न सिक. वो स्टार्टिंग से ही उनका जो बेसिस है, जो फंडामेंटल्स है, जहां से स्टार्ट होती है, वही गलतियां हैं, वही प्लानिंग में गलतियां हैं. दे आर बोर्न सिक कंपनी, उनको बोर्न सिक माना जाता है. देयर आर सम कंपनीज व्हिच बिकम सिक देयर आफ्टर, उनको आप बिकम सिक बोलते हैं. तो जो बिकम सिक कंपनी है उनके लिए पहली बात आती है, वो आती है पुअर मैनेजमेंट. ड्यू टू द inadequate, or you can say incompetent, or any other term can be there. If the manager is not efficient enough, if the manager is not having the potential, it means if the manager is not of that potential, the management will be poor. अगर कंपनी स्टार्टिंग से या बाद में उसका मैनेजमेंट पुअर है, तो ड्यू टू दिस पुअर मैनेजमेंट कंपनी में बिकम सिक. नाउ कंपनी में बिकम सिक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. इसीलिए हम समझते हैं इन नॉर्मल केसेस मैनेजर आर द हाईली पेड पर्सन्स. मैनेजर की सैलरी को लेकर, जो कंपनी को मैनेज करता है उसकी सैलरी को लेकर, नॉर्मली डिफरेंट इंडस्ट्रीज कॉम्पीट करती हैं कि हाई सैलरी या हाई पेड मैनेजर किसके पास है. दे नो इट वेरी वेल दैट दिस इज द पर्सन
who will be responsible for the performance of this specific unit in future. For that point of view, the management is the key. If management is poor, if manager is not having so much potential, if it is the capacity of the management is not up to the mark, then management will be poor, and this is the first point on which basis we can say, we can claim the company becomes sick. Company was not born sick, but it may become sick due to this problem. Company may become sick due to poor deliberate of diversification of funds. The poor diversification of funds, this is another issue. Poor diversification of funds means there are multiple dimensions of a firm. We can say how much fund has to be diversified towards machineries, how much funds have to be diversified towards land, or how much funds have to be diversified towards salary and wages, or raw material, or profit, or any other aspect. The amount of diversification of funds on the different angles, if this diversification of funds is not up to the mark, if this diversification of funds is having the serious problems, अगर लैंड में जितना डाइवर्सिफिकेशन करना था कहीं उससे ज्यादा किया या कम किया, इट मींस अगर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड्स इज हैविंग द प्रॉब्लम, in that case company may become sick due to this problem also. Again, the poor management may be due to the problem with the manager, but this problem of diversification of funds may be due to the problem of not only with the managers but with the owner of the funds also. There is another problem, that is wrong recruitment. If the employees, if the recruitment is wrong, जो वहां पर employees है या including managers, अगर उनका selection का basis गलत रहा है, what the requirement is there, technical requirement क्या है कंपनी के लिए, और basis ही गलत रहा है, recruitment गलत रहा है, तो कंपनी सिक हो सकती है, ये एक बड़ा कारण हो सकता है उसका सिक होने का. ऐसे ही faulty management है, पुअर मैनेजमेंट हो सकता है, फॉल्टी मैनेजमेंट पॉलिसीज आप कह सकते हैं ऐसे. तो मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज है, इफ दीज मैनेजमेंट पॉलिसीज आर फॉल्टी, बिकॉज मैनेजमेंट टर्म इन इटसेल्फ इज द हाउ टू मैनेज. व्हेन वी ऑब्जर्व द टू टर्म मैनेज एंड सॉल्व, मैनेजमेंट एंड सॉल्यूशन, दे आर टू डिफरेंट टर्म्स. Normally, this is the role of manager, not to solve the problem, to manage the problem over a period of time. Solution नहीं चाहिए होता है, management चाहिए होता है. Likewise, there is a problem of high population in developing country, including India. The population is very high. The growth rate of population is too much high. But if the management of the population is done, when we say management of the population, it means number of roads, number of school colleges, number of railway stations, number of airports, likewise number of hospitals. If the number of these facilities increased in proportion with the increment in population, there is no problem. फिर तो कोई समस्या नहीं है. अगर ये सारी सुविधाएं पॉपुलेशन के रेशियो के अनुपात में साथ साथ बढ़ती चली जाएं, ये बात इसलिए बताई गई कि प्रॉब्लम में बी मैनेज्ड.
हमेशा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ करता. This is the basic duty of the manager of the firm, how to manage the problem, because the employees are always in the interest of having higher amount of wages. जो एम्प्लॉयज हैं, जो लेबर हैं, उन्हें तो हमेशा ऊंची अमाउंट चाहिए वेजेस की. तो किस तरह से मैनेज की जाएगी प्रॉब्लम को? टेक्निकली, साइकोलॉजिकली, मोटिवेशनल हेल्प से, डिविडेंड के माध्यम से. दैट इज द duty of the manager. Therefore, if the management policies are faulty, if they are sticky, if they are adamant, then the company may become sick. So there are some issues due to born sick. There are some issues due to become sick. The company may become sick due to management, due to diversification of funds, due to wrong recruitment, and due to, you can say, faulty management policies. And some companies are made sick. When they are made sick, it means deliberately the government made the company sick. When we say made sick, it means there may be sudden change in the government policies. When we say, suppose during trade war or during any other abnormal conditions, government changes the policies. And due to these change in the policies, some companies are adversely affected. And those adversely affected companies may become sick. So those companies have become sick due to the change in the policies. And the change in the policies were the demand of the hour. आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कोविड का इशू. Due to the COVID, to face the COVID problems, government made changes to a number of policies. हो सकता है कुछ कंपनीज को गवर्नमेंट की जो चेंज पॉलिसी है उनकी वजह से प्रॉब्लम हो. कंपनी में came in the category of sick in the near future. This may be the problem. This may be the problem. There may be one problem related to the technological change. कोई कंपनी थी बहुत पहले से चली आ रही थी. Now new technology arises. वहां का जो पूरा स्टाफ है, पूरा जो लेबर है, एम्प्लॉयज है, they are not technically sound. If they are not technically sound and due to the trade unions, the firm is not in the position कि वो उन एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल सके, हटा सके. अब कंपनी एम्प्लॉयज को नौकरी से हटा भी नहीं पा रही है और एम्प्लॉयज टेक्निकली साउंड भी नहीं है. अब कंपनी को उन्हीं से काम चलाना होता है. कंपनी may come in the category of sick due to this problem also. There may be some problems like you can say macro political, social, economic problem. A political, socio-economic problem means the problem, the policies which are set up by the officials and taken up due to some political compulsions. कुछ ऐसी पॉलिसीज हो सकती हैं जो ऑफिशियल्स लें, पॉलिसी मेकर्स उसको अडॉप्ट करें, लेकिन बट नॉट ऑन द मेरिट बट ड्यू टू द पॉलिटिकल कंपल्जन्स. इस तरह की जो पॉलिसीज होती हैं उनकी वजह से भी कुछ कंपनीज सिक कैटेगरी में जा सकती है. तो इट मीन सिंपली दैट there are the companies, or you can say different companies, which may go in the category of different sickness. Likewise, born sickness, just wait. Likewise, born sickness, become sickness, and you can say made sickness.
Now, अब the nature है sickness की, this nature of industrial sickness may be classified into some categories. कोई ज्यादा सिक है, कोई कम सिक है, और यू कैन से कोई जेन्युइनली सिक है, कोई इंसाइपिएंट सिक है, कोई इंड्यूस्ड सिकनेस है. तो ये कौन कौन सी कैटेगरीज हैं नेचर ऑफ सिकनेस के एंगल से? द फर्स्ट वन इज genuine sickness, which is beyond the control of the promoters. This is genuine sickness. Genuine sickness means which is beyond the control of the promoters of the concern despite the sincere efforts by them. It means if the manager, if the owner, if the employees all are working in the same direction, but genuinely there is no way out, and the company is sick, the company is known as a genuine sick. Is the genuine sickness of the company. There is another concept known as incipient sickness. Incipient sickness due to basic non-viability of the project. If the project is non-viable, जिस पर कंपनी काम कर रही है वो वाइबल नहीं है, उसमें कमाई कम है, खर्चा ज्यादा है. इफ वाइबल ही नहीं है तो वो तो सिकनेस होगी. तो उसको कई बार हम इंसिपिएंट या इंसाइपिएंट सिकनेस बोल देते हैं. दैट इज ड्यू टू नॉन वाइबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट. There is another type of sickness which is known as induced sickness. Induced sickness, you can say motivated sickness from some point of view. So induced sickness, which is due to managerial incompetencies and wrong policies pursued deliberately for want of genuine stake. It means for genuine stake, or you can say to achieve the higher amount of profit, suppose wrong policies pursued or managerial incompetencies are there. From that point of view, if the firm becomes sick, उसको हम कई बार induced sickness बोलते हैं. तो induced sickness हो, incipient sickness हो या genuine sickness हो, तो इन तीनों को हम अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं from that point of view. So this is a man-made sickness in which some promoters, some managers adopt fraudulent practices to start a concern and to get away with the money obtained by fraud and all these. It means ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, हमें यहाँ नाम नहीं लेने चाहिए, बैंक्स के हों या फर्म्स के हों, जो आए फर्म्स को उन्होंने फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस में जानबूझ के गलत प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया और कंपनी को लॉस मेकिंग किया और उसके बाद पैसा कमाकर कहीं निकल गए. So it means this is a man-made sickness in which some you can say some negative type of promoters adopt these practices and they start, and with the negative practices they obtained the money, they made fraud and they went away. So basically this is another type of man-made sickness. It means industrial sickness is a concept which is having a number of dimensions, and we as a student हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन डायमेंशंस को अपने स्टडीज का पार्ट बनाएं. When we observe that how sick the company is, कोई कंपनी कितनी सिक है, likewise we can when we observe the सर हाँ बेटा सर जेन्युइन सिकनेस का क्या रीजन हो सकता है फिर अगर सारी चीजें सही हैं तो? genuine sickness means simply कि सर सारी चीजें, रीजन हाँ सारी चीजें सही हैं, सब लोग बड़ा मेहनत भी कर रहे हैं, मैनेजर भी बहुत मेहनत कर रहा है, एम्प्लॉय भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, पॉलिसीज भी उनके फेवर में है, बट दैट मे बी ड्यू टू लोकेशन, दैट मे बी ड्यू टू नेचुरल फिनोमिनन, कि जिस वजह से वो सिकनेस है
वो वजह उनके हाथ में नहीं है। हाथ में नहीं का मतलब मेहनत के बल पे उसको वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आपने अभी इसमें बात की जेन्युइन सिकनेस के बाद इंसाइपियंट की, इंसाइपियंट में बात है नॉन वायबिलिटी की। तो नॉन वायबिलिटी में आपको बताया गया कि जहां इनकम, सर जैसे हाँ बोलो। सर जैसे इंडस्ट्रियल सर्वे करते हैं कहीं भी इंडस्ट्री लगाने से पहले, तो जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, सपोज वो नेचर से है कैसे भी है, तो उस सर्वे में सर वो चीज एनालिसिस नहीं की जाती कि शायद ये प्रॉब्लम्स यहाँ हो सकती हैं, तो वो पहले अवॉइड कर सकते हैं जनरल सिकनेस या नहीं सर? नहीं नहीं, जेन्युइन सिकनेस कैन नॉट बी अवॉइड। अगर इंडस्ट्रियल सर्वे पहले किया गया, उस सर्वे में प्रॉब्लम्स आई और उन प्रॉब्लम्स को टैकल कर लिया गया इन टाइम, तब तो कोई इशू ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर उन प्रॉब्लम्स के साथ इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर दी गई या प्लांट स्टैब्लिश कर दिया गया, अगर ऐसा हुआ, तब तो वो बॉर्न सिक हो गई कंपनी। तब तो इंडस्ट्री प्लांट बनने से पहले ही प्रॉब्लम थी, द कंपनी इज इन द कैटेगरी ऑफ बॉर्न सिक, वो इशू अलग है। लेकिन जेन्युइन सिकनेस का कहना यह है, कंपनी के पास जो मैनेजर हैं, कंपनी के पास जो एम्प्लॉयज हैं, या ऐसा कहें कंपनी जिस एरिया में काम करती है, जिस कंट्री में काम कर रही है, उस कंट्री के पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतना ही है, इससे आगे नहीं है। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ही नहीं है, तो कंपनी बहुत कोशिश करने के बाद जितना वो डेवलप कर सकती है करती है। बट इवन देन, जैसे आप कह सकते हैं, देयर आर नंबर ऑफ केसेस इन टर्म्स ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री। डिफेंस इंडस्ट्री में जो टेक्नोलॉजी डेवलप्ड कंट्री के पास है, वो डेवलपिंग या बैकवर्ड कंट्री के पास नहीं है। डिफेंस मटेरियल बनाने वाली कंपनीज जो बैकवर्ड कंपनी में काम कर रही हैं, बैकवर्ड कंट्रीज में काम कर रही हैं या डेवलपिंग कंट्रीज में काम कर रही हैं, वो नॉर्मली सिक रहती हैं। मान लिया कोई कंपनी आज से करीब 30 साल पहले इंडिया में काम कर रही थी और डिफेंस मटेरियल बना रही थी, तो वो अपने आप को अनसिक इसलिए नहीं कह पाती थी कि वो तो सिक ही रहेगी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल नहीं थी जो डेवलप्ड कंट्री के पास थी। दैट इज जेन्युइन सिकनेस, देयर इज नो अदर ऑप्शन। मेहनत से नहीं चलेगा काम। when technological upgradation और टेक्नोलॉजिकल स्किलनेस इज नॉट अवेलेबल, और उस टेक्नोलॉजिकल स्किलनेस को हम कई बार नेचुरल प्रॉब्लम कहते हैं कि वो हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए उसको जेन्युइन सिकनेस कहा जाता है। तो जो चीजें हाथ में नहीं है, अदरवाइज आप कह सकते हैं कि वो अपना प्लांट यहाँ बंद करें, बात ठीक है। लेकिन जैसे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते थे कि जब आपको उतना मार्केट में सस्टेन करने के लिए मिनिमम प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप सस्टेन कर जाते हैं कभी कभी। तो अगर मिनिमम प्रॉफिट मिल रहा है बट ऐसा लगता है कि ये मिनिमम प्रॉफिट बाकी कंपनी के प्रॉफिट की तुलना में बहुत कम है, कंपनी फील इटसेल्फ सिक but continues, therefore it is known as the genuine sickness। अब इन इश्यूज के साथ अगर आगे बढ़े, मैं जहां बात कर रहा था बीच में कि जहां पर जब हम पॉवर्टी को पढ़ते हैं, कई बार पुअर पर्सन को देखते हैं, तो वहां एक आध बार जिक्र आपके सामने शायद किया या नहीं किया पता नहीं, जिक्र आता है डिग्री ऑफ पॉवर्टी का। इफ ए पर्सन इज पुअर, दैट हाउ मच पुअर। अगर गरीब है तो कितना गरीब है, एक व्यक्ति गरीब है, दूसरा गरीब है, 30 मान लो 3 व्यक्ति हैं, तीनों गरीब है, तीनों में से ज्यादा गरीब कौन सा है, कम कौन सा है, ज्यादा वाला कितना परसेंट ज्यादा गरीब है, कम वाला कितना परसेंट कम गरीब है। ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस की बात आती है। इफ द इंडस्ट्री इज सिक, देन हाउ मच सिक। इफ अ बॉडी इज सिक, a person is sick, a human being is sick, if he or she is at the last stage, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए वो डेथ बेड पर है, तब तो वो 100% सिक हो गया ना, उसमें हेल्थ बची नहीं। और बहुत ही हल्की प्रॉब्लम है तो ये हो सकता है कि वो लेस देन 1% सिक हो, 99% फिट हो। तो दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस दैट शुड बी अंडरस्टूड हियर। Industrial sickness is growing at an annual rate of around 28%.
and 13% respectively in terms of number of units and outstanding numbers of bank credit. अगर हम बैंक क्रेडिट की बात करें, बैंक के एंगल से बात करें, तो इंडस्ट्रियल सिकनेस इंडिया में करीब करीब 13% के हिसाब से एनुअल रेट के हिसाब से बढ़ रही है, 13% एनुअल रेट के हिसाब से बढ़ रही है अगर हम इंडस्ट्रियल सिकनेस को बैंक क्रेडिट के एंगल से देखें तो। अगर हम इंडस्ट्रियल सिकनेस को नंबर ऑफ यूनिट के एंगल से देखें तो लगभग 28% के आसपास फर्म्स हर साल सिक हो जाती हैं, सिक कैटेगरी में आती हैं, आ रही हैं इन इंडिया। तो इंडस्ट्रियल सिकनेस का जो मैग्नीट्यूड है वो तेजी से बढ़ रहा है। इट इज एस्टिमेटेड दैट as of today there are more than 2 lakh sick units in India. तो लगभग 2 लाख के आसपास इंडिया में सिक यूनिट्स हैं and with an outstanding bank credit of about rupees 7,000 crores. अब इन सब का जो बैंक क्रेडिट है, बैंक से जो लोन है वो 7,000 करोड़ से कहीं ज्यादा का है। ये कंपनी, अब आप ये भी कह सकते हो कि कंपनी ने अपना लोन लिया बड़े अमाउंट का, अपने आप को सिक पोज किया, उसके बाद गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि हम तो सिक हो गए हैं, हमें कुछ इंसेंटिव दे दिए। देयर आर नंबर ऑफ डायमेंशंस, बट एज ऑन डेट देयर आर मोर देन 2 लाख सिक यूनिट्स इन इंडिया और उनका जो बैंक क्रेडिट है इट इज मोर देन 7,000 करोड़। साथ ही साथ nearly 29,000 crore units are added to sick list every year. 2 लाख के आसपास आज है, अंदाजा बताया गया। लगभग 28 से 29,000 यूनिट्स हर साल ऐड हो जाती हैं, सिक यूनिट्स। दिस इज द सिचुएशन कि जो सिक यूनिट्स क्या है, उनके फीचर्स क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनका मैग्नीट्यूड क्या है, ये आपको प्लान करना होगा अपने हिसाब से आगे। अब कल, अच्छा, आगे वाले जो इश्यूज हैं उसको मैं बताऊंगा कल की कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या डिस्कस करेंगे। आज यहीं रोकेंगे क्लास को। और मुझे लगता है, अच्छा पहले आप बताइए आपका कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ आप कहना चाहते हो। आज आपकी संख्या सर कम क्यों है? ये शेयर कर देना सर आप, जैसे आप जो पढ़ा ये तो हो जाएगा। ये तो क्योंकि मैंने जानबूझ के कोशिश किया है कि यूट्यूब लिंक पे है, यूट्यूब भी आपके पास आ जाएगा, लिंक आ जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मैं कह रहा हूँ उसमें भी तो हमें सुन के फिर नोट्स बनाने होंगे सर, मैं वही कह रहा हूँ। आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम पीपीटी नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो आप ही के लिए बनाया गया है ना, ये आप ही के पास आएगा, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रहा था कि आपकी संख्या कम क्यों है। अब ऑनलाइन में भी बच्चे नहीं आ सकते, तो ये तो मुझे समझ नहीं आता भाई। सर उठे नहीं होंगे बच्चे, उठे नहीं होंगे तो कल से और आधे ठंड घंटे है ना तो सो रहे होंगे मे भी। नहीं, ये तो नहीं चलेगा ना काम। पता नहीं, पूछ लेंगे मे भी। सर्दी का प्रकोप है सर। सर्दी का प्रकोप तो है, लेकिन मैं आपको बताया था कल शायद कि आपसे पहले भी एक क्लास हुई है बेटा MA1 की, वो 7 बजे हो रही है और वहाँ 14 थे आज। हालांकि 14 को मैंने कम कहा, लेकिन 14 थे आज। तो कोई सर्दी कोई मेजर इशू नहीं है क्लास कराने में। उसके बाद आप दिन भर फ्री हैं, अपने और काम कीजिए। चलिए तो ये तो हम ऐसे एज्यूम कर रहे हैं, मे भी ना हो ये रीजन। मे बी ठीक सर है। एक ये बार तो जस्ट ऐसे ही है। बोल देंगे सभी को कि टाइमिंग यही रहेगी, तो मे बी कल संख्या बढ़ जाए। टाइमिंग ये है कि नो डाउट, और इसका कोई खास पर्पस है कि मैं कुछ इन्वॉल्व हूँ तमाम कामों में। मुझे लगता है कि अर्ली मॉर्निंग में क्लास हो जाएगी तो फिर मैं फ्री हो जाऊंगा, और दिन में क्लास करने में हो सकता है मुझे फिर प्रॉब्लम से है, इसलिए ये कोशिश की गई है कि अर्ली मॉर्निंग। और तो आपके लिए भी ठीक है, अर्ली मॉर्निंग आप क्लास करें, जल्दी उठेंगे, उठना यस चाहिए। ठीक है बेटा, आप कल मिलेंगे, आगे क्लास कल करेंगे, ठीक है। सर जैसे आप ये पढ़ाते हो तो आप शेयर, मतलब जो स्क्रीन शेयर करके नहीं पढ़ाते थे, ताकि हम भी साथ साथ पढ़ते रहें, कभी कभी स्क्रीन कोई